हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ। आई होप यू लाइक माय यस्टरडेज वीडियो ऑन बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एग्जैक्टली बिहेव द वे वी डिस्कस्ड अबाउट इट। और अगर आप मुझे लाइव मार्केट में इंडेक्स के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं लगातार अपडेट करती रहती हूँ। ये मेरा चैनल है स्टॉक प्रो इंडेक्स ट्रेडिंग। उस पर आई हैव सेड इन द मॉर्निंग हेवी रेजिस्टेंस एट 44,700 और उसके बाद मैंने निफ्टी का भी बताया था कि कहाँ पे क्लोजिंग होगी और एग्जैक्ट रेंज दी थी ऑफ बैंक निफ्टी एक्सपायरी रेंज, एंड बैंक निफ्टी एग्जैक्टली एक्सपायर्ड इन अ सिमिलर वे। तो यह इस चैनल पे, दिस पर्टिकुलर चैनल इज स्टॉक प्रो इंडेक्स ट्रेडिंग। इस पे मैं केवल आई टॉक अबाउट इंडेक्स ओनली। इंडेक्स में किस तरह का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, किस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है, केवल उस पे, बट बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन वहां पे पास ऑन करती हूँ। तो अब क्या है, आज का दिन एक बहुत सीरियसली इंपॉर्टेंट डे है। क्यों? मैं आपको सारे सेक्टर्स दिखाती हूँ। आप पहले तो यहाँ देखिए साइड में, every single sector has fallen down by 2%, 2 to 1%. Have a look at mid cap. ये एक बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद फिर इसने कंसोलिडेट करने की कोशिश की और आज फिर एक वेरी वेरी स्ट्रांगली बेरिश कैंडल बनी है। IT again in a similar situation, very strong bearish candle. FMCG, very strong bearish candle. FMCG was trying to consolidate, but again a very strong bearish candle has come up. Again MNC, mid cap was very aggressively falling down. Then media, mid cap, auto. Which sector do you want to talk about? Look at the uh, PSU banks, price rejection from the higher levels. Then Nifty 200, Nifty 500, Nifty, real estate, metal, anything that you pick up, you will see that it is turning negative, right? And it's a very serious concern. I'm really concerned कि अब मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, Let's just have a look at what is happening in. This is how Sensex looks. This is how Sensex looks. तो 1, 2, 3, 4 की जो 4 दिन की जो अनसर्टेनिटी थी, आज इसको कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया सेंसेक्स ने। गैप अप ओपनिंग हुई और फिर स्ट्रांगली नीचे आ गया। तो मुझे लगता है कि अब जो बाउंड्रीज हैं सेंसेक्स की 66,400 और 65,500, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। बिलो 65,400 यू कैन एक्सपेक्ट 64,800 यहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है, और ऊपर जाना मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है। तो एक बहुत इजी ट्रेड जो रहेगा वो यही रहेगा, 66,400 की कॉल को सेल कर सकते हैं। सो दिस इज सेंसेक्स ऑप्शन चेन। और अगर हम देखते हैं तो 66,400 के कॉल कहाँ पे है राइट नाउ? इट्स at 7 rupees, so which is already depleted quite a bit, but you may look for some 66,000 call option as well, could be a good opportunity. But अब अगर हम देखते हैं कि कहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है, तो at this level you can see a good call writing is happening. 66,000 can be a strong resistance zone. तो अगर आपको लगता है कि कल थोड़ा सा गैप अप खुलता है सेंसेक्स और यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है 66,000 से, आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी एटलीस्ट फॉर 600 पॉइंट्स। तो ये बहुत स्ट्रांगली बेरिश है। तो आई एम नॉट एट ऑल एनी कॉल ऑप्शन दैट यू वांट टू सेल, यू कैन सेल and make good money, but wait for support and the resistance. आज का जो ट्रेड था सेंसेक्स में, it wasn't unidirectional, थोड़ा सा gap down opening, it was a unidirectional trade. See here, open equal to high, slightly gap up खुला, open equal to high, and then after that it just kept on going down. Even in bank nifty for that matter, slight gap up opening, और उसके बाद लगातार बैंक निफ्टी नीचे चलता चला गया। एक पॉइंट जहां पे मुझे क्लैरिटी आ गई थी कि मार्केट को नीचे ही जाना है और मैंने कॉल ऑप्शन सेल करे थे, वो था जब ये डबल टॉप बना था और 44,700 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स थे और
even when the price went up or call writers add ho gaye the, तो I was sure that Bank Nifty is not planning to go up no matter what. And that is when I shorted, and that is when I said that there is a very strong resistance at 44,700, right? And this is how Bank Nifty behaved. So again, just to conclude, छोटा सा वीडियो है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए है ये वीडियो. तो अगर आपको कल ट्रेड करना है तो अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है थोड़ी सी और 66,000 से सेंसेक्स अगर रेजिस्टेंस लेता है, आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी. आप डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो. और अगर सपोज गैप डाउन ओपनिंग हो, बिकॉज आज मैं देख रही थी Hang Seng and Nikkei, Japanese market and Hong Kong market were very, very negative. I'm sure in the live market also I discussed about it. I said there is a probability that market will go down. And I'm sure there is some international news which I'm not aware of. But look at the drop that has come in Bank Nifty. So this is BSE Sensex, but Bank Nifty has also fallen in a similar fashion. Bank Nifty has also fallen in a similar fashion. So again, as of now, आप कोई भी कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं. 66,200, 66,300, 66,000, ये सारी कॉल्स ऑप्शन आप सेल कर सकते हो on any resistance. So this was my short update on what's happening in the broader market. Every single sector is negative. So be careful while you trade. All right. All the best. Take care and do join me live trading for live trading, where I definitely will discuss about index. Like today, I said 44,700 is a resistance, and I shorted from there. Similarly, some inputs you will definitely get, which will be based on data, which will be based on price action. All the best. See you in the next video, and see you in the live market tomorrow. Bye bye. Take care.